फंगल डिजीज। फंगल डिजीज स्टार्ट करते हैं। So we have completed bacterial disease, viral disease, pathogen disease, elementary disease, and the last is fungal disease. फंगल डिजीज में सिर्फ एक ही डिजीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड दैट इज व्हाट द रिंगवॉर्म। Why it is called as ringworm? Because the site of infection, जहाँ पे ये इन्फेक्ट करेगा उस जगह पे ऐसे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, and that almost looks like the structure of a worm, so called as ringworm. जिस जगह को ये अफेक्ट करता है ऐसे थोड़ा बहुत अपीयर होता है, that is why structurally it is looks like a ring worm like structure, so called as what ringworm. ठीक है ना? ringworm positive pathogen, epidermophyte, ट्राइकोफाइटर, माइक्रोस्पोरम। These are the different type of fungus which actually cause the ringworm. And remember, medically, the ringworm is called as tinea. मेडिकल टर्म में रिंगवर्म को क्या बोलते हैं? टीनिया। The ringworm, it is to be sprayed. This particular fungus is to be sprayed from soil, also by towel, gum, cloth, etc. हम लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं ना, जो इन जनरली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि बेसिन के पास जो टॉवल होता है, कंघी हम लोग करते हैं घर में, एक ही कंघी में सबको मैक्सिमम शेयर कर लेते हैं, ऐसे कुछ क्लथ जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। दैट इज द वे थ्रू व्हिच इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेनली ये कहां से होगा? सॉइल से, but it is being infected from person to person by means of this way, right? And symptom क्या होगा? Dry scaly lesions, जहां पे कोई infected area जो होगा dry स्किन हो जाएगा, scaly lesions होगा, जस्ट infection टाइप का होगा, injury टाइप का होगा, intensive itching, बहुत सीवियरली इचिंग फील होगा, मॉइस्ट एंड हीट, help this fungus to grow. तो याद रखिएगा, मॉइस्ट एरिया मतलब मॉइस्चर एंड हीट, ये दोनों फंगस को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो फिर टीनिया का जो इन्फेक्शन है वो सीवियरली स्प्रेड होता है। सीवियरली क्या होता है? स्प्रेड होता है when that area will remains moisture with heat. ये दोनों एरिया कहाँ पे आपको मिलता है ना? That is
Fold check. So we are discussing about this ring one. So I'm telling you that the area which is being folded in the skin in the folded form, that is the area where the sweating will be deposited. स्वेटिंग डिपॉजिट रहेगा तो मॉइस्ट रहेगा वो एरिया, हीट भी रहता है, तो इसीलिए जहां पे स्किन फोल्डेड फॉर्म में रहता है ना वहां पे रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, समझे कि नहीं? तो जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया बैवे and टीनिया लुइस. टीनिया
मैंने आपको बोल दिया कि इट इज द मेडिकल टर्म और द रिंगवर्म. Tinea pedis occurs in the foot. Tinea capitis देखिए एरिया के हिसाब से होता है टीनिया. जैसे कि टीनिया कैपिटिस होता है स्काल्प में, ठीक है, एंड टीनिया क्रूइस होता है ग्रोइन एंड पेरिनियम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो टीनिया कैपिटिस इट इज ऑकर्स इन द स्काल्प. टीनिया बार्बी दैट इज इन द नेक एंड बियर्ड पार्ट. एंड टीनिया क्रूइस ग्रोइन एंड पेरिनियम. So depends on the area, it is a different type. And tinea pedis जो फुट में होता है इसको बोलते हैं एथलीट्स. Why it is called as athlete's foot? ना जिसको ये टीनिया पेडिस होता है ना फुट में, वो फुट का जो अपीयरेंस है ऑलमोस्ट दैट इज लुक्स लाइक ए फुट ऑफ एन एथलीट. एथलीट का जो फुट होता है वो स्मूथ होता है कि रफ वॉर्टिस के लिए होता है. रफ वॉर्टिस के लिए ड्राई होता है कि नहीं, सेम टाइप का अपीयरेंस हो जाता है. When the tinea, this what na pedis occurs in the foot. That is why it is otherwise called as athlete's foot. समझे? So we have completed the different type of common human disease. Bacterial से लेके fungal तक हम लोग complete कर लिए. Now it is the time to start the next important topic, and that is what na immunity. Start करते हैं immunity. Immunity is actually the body defense mechanism. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके बॉडी में है. लाइकवाइज इम्यून सिस्टम इज आल्सो देयर. बट जैसे बाकी सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है, डेफिनेट फंक्शंस प्रेजेंट है, बट इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम डजंट हैव स्पेसिफिक ऑर्गन. They have specific organ, but in generally we can say that the what na the structurally the organs which is present in the body with multiple function. जैसे कि appendix की बात करते हैं, appendix का primary function क्या है ना, that is related with the digestion. but उसका secondary function क्या है ना, immunity. बात को समझ रहे हैं? As because in case of human being the appendix is vestigial, so that is why the function is restricted with the immunity of the what na appendix. वैसे ही बहुत सारा ऑर्गन है जैसे कि स्प्लीन. स्प्लीन का मेन काम क्या है ना, इट इज एक्ट एज व्हाट ना ग्रेवयार्ड ऑफ आर्मीज. सेकंड काम क्या है ना, रिजर्वर ऑफ ब्लड, ब्लड बैंक उसको बोलते हैं. बट दैट आल्सो हेल्प्स इन द इम्यूनिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट, बट अ मास ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू फॉर्म व्हाट ना इम्यून सिस्टम. ठीक है. नाउ immunity is the father of immunology. Father of immunology, Edward Jenner. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किए थे. ठीक है. Two types of immunity are there. Number one, innate immunity. Innate immunity means it is by birth or inborn. देखिए ये जो इम्यूनिटी है ये सबके केस में कॉमन है, सेम है, as it is present since from the birth. As it is present since from the birth, it is common to all. And this particular immunity has the very definite function, and that is what? Now they are acting as a barrier.
देखिए आपके बॉडी के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, सराउंडिंग्स प्रेजेंट है, सराउंडिंग्स में मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस आर प्रेजेंट. They always try to enter into the body through the food, through the air, and that is why the most susceptible part of your body is what? The gastrointestinal tract, respiratory tract, urinogenital tract, and that is why the most important immunity of your body is present in these three parts, and that is what? The mucosal associated lymphoid tissue, MALT. कहाँ present है? इन तीनों जगह पे present. Because these three areas which is always encounter with what, or always exposed to the pathogens. The pathogens are always try to enter into the body. These three इसी के थ्रू एंट्री करने के लिए ट्राई करते हैं हमेशा. तो आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारा बैरियर प्रेजेंट है जो कि उस पैथोजेन को या तो प्रिवेंट करते हैं एंट्री में, अगर एंट्री कर गए तो उनको इमोबिलाइज कर देते हैं, किल कर देते हैं, फैगोसाइट कर देते हैं. दैट इज बिकॉज द रीजन व्हाई this immunity is what? Non-specific immunity. क्या है ये? No specific. जितने भी गेस्ट मेरे घर में आएंगे सबके लिए एक ही टाइप का ट्रीटमेंट. कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई वीवीवीआईपी नहीं है, सब मेरे लिए सेम. मतलब अपने बॉडी के लिए जितने भी पैथोजन आएंगे सबके लिए एक ही टाइप का ट्रीटमेंट. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन-स्पेसिफिक. And that is why it is non-specific immunity. That is why it is called as innate immunity. That is why it is called as what? Na barrier immunity. हम देखेंगे क्या बैरियर आपके बॉडी में प्रेजेंट है, एंड यू जस्ट थिंक अबाउट कि ये क्या सबके केस में सेम है या सिर्फ हमारी बॉडी में ही है. देखेंगे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं. innate immunity, it is also about non-specific and barrier. याद रखिएगा ये पॉइंट, non-specific and barrier immunity. So under that we will start number A, physical barrier. देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो सीधा एग्जाम्पल बेस्ड आता है. एग्जाम्पल सीधा पूछेगा कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन एग्जाम्पल आता है जो फिजिकली उस पैथोजेन को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है. And that is what? In number 2, mucus. स्किन डायरेक्टली प्रिवेंट करेगा, बैरियर का काम करेगा. म्यूकस भी बैरियर का काम कर रहा है बाय मींसिंग what? Are trapping this microorganism, catching this microorganism to make it immobilized. ठीक है. एंड अभी हम बात कर लेते हैं म्यूकस कहाँ प्रेजेंट है. म्यूकस कहाँ प्रेजेंट है? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. याद रहेगा ये तीन. यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, हर चीज लिंक है, ध्यान रखें. नंबर 2, आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो केमिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं, आइदर एंट्री करने में या तो अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं या तो डायरेक्टली उनको किल करते हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट ऐसे कौन सा केमिकल्स आपके बॉडी में है जो ये सब काम करता है. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? फिजियोलॉजिकल बैरियर, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल बैरियर. टेल मी. वेरी गुड. चलिए. बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है, सही जगह पे आप लोग का दिमाग काम कर रहा है, ये अच्छी चीज. बोलिए. एक तो हो गया कौन सा? नसलाइन, टीयर. ये दोनों में कॉमन क्या है? लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज ए बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम
और बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम दे विल किल द बैक्टीरिया। तो ये सलाइवा हो गया, टीयर हो गया। They also possess or including what the hydrochloric acid present in the stomach and hydrochloric acid के presence में बहुत सारा माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है कि नहीं, जो फूड के थ्रू एंट्री करते हैं, राइट। और क्या होगा ना, बाइल secreted by what ना, liver bile juice। तो बाइल जूस पे हाईली अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है कि नहीं, आपको याद होगा। And that highly alkaline medium also provide the unfavorable condition for the growth of the microorganism, right? और क्या होगा ना, sebum, the oil secreted by the sebaceous gland or oil gland। sweat भी होगा secreted by what ना, sudorific gland or sweat gland। you know, urine also। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है जो अननोइंगली, हम लोग को पता नहीं, अननोइंगली दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग द बॉडी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। समझ में आया कि नहीं। और भी हो सकता है ईयर वॉक्स ग्लैंड, जैसे कि ईयर वॉक्स जो सिक्रेट करता है, दैट इज व्हाट इज सेरुमेन। ये भी आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए सेरुमेन। So these are all comes under the physiological barrier or chemical barrier, and these two collectively called first line of defense। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इंडिकेशन ये क्या हो रहा है, देखिए सपोज टू बी आप किसी के घर में या किसी के घर में एंट्री करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। उनका बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप बैरियर होगा कि पहले बड़ा सा वॉल होगा, बड़ा सा एक गेट लगा होगा, उस गेट को आप क्रॉस करके जाएंगे तो और कुछ ग्रिल लगा होगा घर के चारों तरफ, उस ग्रिल को क्रॉस करके जाएंगे तो दरवाजा होगा, उस दरवाजा को क्रॉस करके जाएंगे तब जाके आप घर में एंट्री कर पाएंगे। मतलब मेनी स्टेप में बैरियर। आप समझे, हमारे बॉडी में भी वैसे मेनी स्टेप में बैरियर, मेनी स्टेप में इम्यूनिटी प्रेजेंट। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन को कोई क्रॉस कर गया मतलब ये थोड़ा सा क्या होगा ना, स्ट्रॉन्ग पैथोजन होगा जो फर्स्ट को क्रॉस कर गया। सेकेंड प्रेजेंट है, उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब जाके बॉडी में एंट्री करेगा। देन द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस विल एनकाउंटर दैट, देन डिजीज होने का चांस। तो आप समझिए, हम डे टू डे लाइफ में मिलियंस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन कभी रेयरली डिजीज होता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव सेवरल व्हाट ना, लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंडर, नंबर सी, साइटोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। साइटोलॉजिकल और सेलुलर बैरियर, इट इंक्लूड all phagocytic cells which are phagocytic in nature are including under this cytological or cellular barrier. Tell me the examples. PMNL, like neutrophil, very very important. Macrophage, तो PMNL like neutrophil, PMNL का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WBC like your PMNL neutrophil, macrophage, मोनोसाइट होगा, फैगोसाइटिक है कि नहीं, हिस्टियोसाइट, कनेक्टिव टिश्यू में फैगोसाइटिक सेल्स है। और बताइए आप लोग क्या क्या पढ़े डिफरेंट चैप्टर में, बताइए। बफर सेल होगा प्रेजेंट इन द लिवर, chondroclast present in the cartilage,
Osteoclast present in the bone. Microglia present in the nervous tissue. और क्या होगा बताइए? और phagocytic cells क्या होगा? Dust cell. ये alveoli में होता है. Alveoli में जो phagocytic cells है उसका नाम क्या है? इसको dust cell भी बोलते हैं और alveolar macrophage भी बोलते हैं. ठीक है? और सबसे important है that is what? Natural killer cells. Natural killer cell very very important. और NK cell. एक क्वेश्चन NK cell से आता है इसलिए ध्यान रखिए. So what is the mechanism of NK cells? NK cell that will release porphyrin. तो NK cell क्या रिलीज किया? Porphyrin protein. That porphyrin protein will create the pores in the target cell. And target cell यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं? Target cell यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं? Unwanted cells. Unwanted cell किसको बोल रहे हैं? ना पैथोजेंस हो गया, वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, ट्यूमर और कैंसरस सेल हो गया. सारे के सारे अनवांटेड है कि वांटेड है? अनवांटेड सेल को ये टारगेट करेगा. And they will create the pores in the target cell membrane. तो टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको टारगेट करके पोर फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है? अब क्या होगा देखिए, वाटर विल एंटर. वाटर एंट्री करने से स्वेलिंग होगा कि नहीं? ब्रस्ट कर जाएगा. ब्रस्ट करने से फ्रैगमेंटेड हो जाएगा ये. and that fragmented will be phagocyte by the phagocytic cells. So this is actually a collection of event. And what is that collection event? The number one is inflammation. Next is cytolysis. Next is phagocytosis. ये तीन एक्टिविटी करता है कौन? The NK cell. So this is exactly the function of NK cell: the inflammation, cytolysis, and phagocytosis. अब इन्फ्लेमेशन कहां तक होगा ना? स्वेलिंग तक इन्फ्लेमेशन है. ब्रेस्ट हो गया तो साइटोलाइसिस, एंड phagocytosis हो गया लास्ट वन. So this is the collection of series of event which is takes place through the NK cells. इसी तरीके से ये टारगेट सेल को किल करता है. समझ में आ गया? तो ये था नंबर सी, साइटोलॉजिकल और सेलुलर बैरियर. वी आर कमिंग टू नंबर डी, साइटोकाइन बैरियर. Cytokine barrier, it include interferon, that is INF. तो otherwise क्या बोलते हैं ना? Biological response modifier. बहुत ही important है. Interferon, biological response modifier. So what is the function of interferon? First of all, interferon is actually a type of glycoprotein. Interferon are called the anti-viral protein. ये viral protein. It is called as what? Antiviral protein secreted by
Yes, secreted by not normal cell, although by viral infected cell. तो यहाँ पे कॉमन सेंस है, आपके बॉडी में अगर इंटरफेरेंस प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी वायरल अटैक। अगर आपके बॉडी में इंटरफेरेंस प्रेजेंट है मतलब वायरस भी प्रेजेंट है, because the interferon is only secreted by the viral infected cell, not by the normal cells. इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कैंसर टॉपिक में, ये कैंसर which is caused due to virus will be treated through what? Interferon. So what is the function of interferon? So first of all, if the virus is present, it alert the other non-infected or normal cell. पहली बात तो ये करेगा कि जो नॉर्मल सेल से जो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उनको वो अलर्ट करेगा ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, स्लो डाउन किया जा सके। नंबर 2, it stimulate the synthesis of an enzyme. It stimulates the synthesis of an enzyme which inhibit the synthesis of a protein necessary for viral replication or multiplication. कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो आईएनएफ यहाँ पे क्या कर रहा है? वायरस को किल कर रहा है कि वायरस रेप्लिकेशन रेट को स्लो डाउन कर रहा है? वायरस रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन कर रहा है। हाउ? Now by means of synthesis of an enzyme. So this is actually stimulate the synthesis of an enzyme, and this enzyme is inhibiting a protein necessary for virus multiplication or replication. तो अगर ये एंजाइम फॉर्म नहीं, अगर ये एंजाइम ज्यादा फॉर्म हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? इनहिबिटेड हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटेड होगा तो वायरल रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। सो इंटरफेरॉन do not kill the virus, although it slow down the multiplication of virus, slow down the rate of multiplication of virus. And second and third, third and fourth, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। So this is all about the innate immunity or barrier immunity or inborn immunity. आपको समझ में आया? Good. So we are coming to the next, that is acquired immunity. We are coming to the second type of immunity called as acquired immunity, and इसको हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं।
What are the characteristics? What are the characteristics? Number one, this is specificity. Specificity का मतलब समझ में आ गया? They are specific to an antigen. वैरायटी ऑफ एंटीजन होगा तो उनका रिस्पॉन्स भी वैरायटी होगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी हुआ कि सेम टाइप ऑफ इम्यूनिटी हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ हुआ, तो डिफरेंट टाइप हुआ तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेगा? डाइवर्सिटी. देखिए, the person which are living in a very hygienic environment or conditions and a person which are living in a very unhygienic slum area, which having the type of acquired immunity will be strong. And the person which are living in the slum area, देखो बहुत ही simple concept है. This particular immunity will be created in the body. It is not by birth. It is acquired. Means this is developed with respect to adaptation. With respect to adaptation. जिसका जैसे adaptation होगा उसका वैसे ही acquired immunity होगा, and that is why it is also called as adaptive immunity. And that is why it is varied from person to person. किसी का ये फिक्स नहीं है, सेम नहीं है. स्लम एरिया में जो रहते हैं, they are facing the different type of antigen in everyday life. क्योंकि हम लोग जानते हैं when the antigen will enter into the body, then only the antibody will form. What is the full form of antigen? Antigen का मतलब क्या है? Na antibody generating substance is called as what? Antigen. Anti means antibody. Gen means generation. Antibody generating substance are called as antigen. तो एंटीजन जब तक नहीं आएगा एंटीबॉडी फॉर्म कैसे होगा? एंड कोई अगर बहुत ही हाइजीनिक सोसाइटी में रहता है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहता है, वो तो एंटीजन के कांटेक्ट में आया ही नहीं. If the person is unable to expose to the antigen, how the antibody will form? How the immunity will develop? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को स्लम एरिया में सबको जाना चाहिए, सबको अनहेल्दी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ ये जो बहुत ही एक्सेसिव पेरेंटल केयर है उसको अवॉइड करना चाहिए. And that gives rise to the person or the individual susceptible to different type of what disease. क्योंकि हमने एक्सपोज तो हुआ नहीं हमारा बॉडी, तो भाई इम्यूनिटी फॉर्म कैसे होगा? इम्यूनिटी फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग कभी ना कभी उस एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे फ्यूचर में, जब पेरेंटल केयर खत्म हो जाएगा. फिर क्या करेंगे? एक्सपोज तो होना पड़ेगा, तब आपका बॉडी तो रेडी नहीं होगा, आपको डिजीज पकड़ेगा, वो भी सीवियर. इसीलिए मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में हम लोग कॉमन कोल्ड वगैरह, आस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लो है, बहुत ही वीक है, इसीलिए बहुत ही हाईली ससेप्टेबल होता है टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस और एजेंट. क्लियर है? इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको हाइजीनिक नहीं रहना, हाइजीनिक में भी रहना है, बट साइमल्टेनियसली हम लोग को खेलकूद करना चाहिए, घूमना चाहिए दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग एनवायरमेंट के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट कर पाए. क्लियर है? So different form or types of immunity in the different persons, so it is diversity. Number third, self non-self recognition. इसका मतलब समझ रहे हैं? This type of immunity
will differentiate own and foreign. So this type of immunity will differentiate the self and non-self, own and foreign. And this immunity will target what the foreign only. कभी कभी ये क्या होता है ना, ये जो डिफरेंशिएशन है ये ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, and that gives rise to the this particular immunity also attack the own cells is called as what ना, autoimmunity. समझ में आए? ये तीन कैरेक्टर क्या इनबॉर्न इम्यूनिटी में था. नेक्स्ट नंबर 4 में आइए, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी. Immunologic memory for future response. क्या ये present था इनबॉर्न में? No. So these are the characteristics which are associated with the acquired immunity, the third line of defense or adaptive immunity. We are coming to the next, that is primary or amnestic response. Primary response मतलब क्या? Initial response है कि नहीं? So initial response का मतलब first time when the body encounter with this pathogen. अगर आपका बॉडी इस पैथोजन के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया है, एनकाउंटर किया है, देन आपका जो बॉडी में रिस्पांस होगा वो क्या होगा ना, प्राइमरी रिस्पांस. एंड प्राइमरी रिस्पांस होता है क्या है ना, स्लो इंटेंसिफाइड और स्लो इंटेंसिटी. as it is slow intensified or slow intensity, so सिम्टम होता है अपीयर. हुआ कि नहीं? ये रिस्पांस तो बहुत ही स्लो है, तो जो पैथोजन को मौका मिल जाता है अपना सिम्टम का अपीयर कराने. दैट इज व्हाई द सिम्टम अपीयर इन द प्राइमरी रिस्पांस. नाउ द स्पेसिफिक B and specific T cell will divide to produce effector B and effector T cell and memory B and memory T cell. And effector B cell and effector T cell, they will control the disease. लेकिन memory T cell will store in spleen and lymph node for future. And इस future response को हम लोग क्या बोलते हैं? Secondary response. अरे है कि नहीं? फ्यूचर रिस्पॉन्स मतलब आगे सेम टाइप ऑफ पैथोजन आपको बॉडी को अगर अटैक करता है तो आपके बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल अवेलेबल होगा, एज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एनकाउंटर. द फर्स्ट एनकाउंटर एज इट इज स्लो, तो सिम्टम्स अपीयर, बट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ऑनवर्ड्स सेम पैथोजन आपके बॉडी को अगर अटैक करता है तो उस पैथोजन को ऑलरेडी आपके बॉडी रिकॉग्नाइज करके रखा है मेमोरी, तो ये इमीडिएटली उसको टारगेट करेगा, उसको किल कर देगा. सो सेकेंडरी रिस्पांस में क्या मेमोरी आपका सिम्टम्स अपीयर होगा, एज इट इज वेरी हाईली इंटेंसिफाइड, वेरी हाई इंटेंसिटी. समझ में आया कि? तो हम लोग आते हैं सेकेंडरी में.
भी सेकेंड टाइम फीवर तो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। बुखार के बाद तुरंत बुखार का हो। नहीं नहीं उसको समझने दो ना, नहीं होना चाहिए। मैं भी भाग रहा हूँ, मैं भी मना कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। बट आपको बॉडी को सेम वायरस कहाँ अटैक करता है? वायरस अपने तेरे लाइफ टाइम में वायरस कम से कम अपना रूप मिलियन टाइम्स चेंज कर गया हो। क्यों? एवोल्यूशन टॉपिक में पढ़े थे। हर चीज को भूल जाओगे तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई आप इस चीज को इसके साथ कोरिलेट करो, लिंक करो। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो सेकेंडरी और एनालिस्टिक रिस्पॉन्स। Others, when same pathogen attack the body next onwards. So it is highly intensified or high intensity. So faster response. And इसीलिए no symptom appear. But here directly memory B and memory T cell. Directly the memory B cell and memory T cell will divide to produce effector B cell. या फिर डायरेक्टली वो जो मेमोरी सेल था तो तुरंत चेंज होकर इफेक्टर में कन्वर्ट होगा। ये बहुत ही हाईली फास्टर रिस्पॉन्स है, तो ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल will be changing to effector B cell and effector T cell, which will kill the pathogen. That is why the pathogen will not get the sufficient time to multiply the number. अरे सिम्टम कब अपीयर होगा? जब उनका नंबर, उनका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनको टाइम चाहिए। अब फर्स्ट रिस्पॉन्स में मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स में टाइम मिल गया बोल के वो अपना नंबर मल्टीप्लाई कर दिए एंड सिम्टम अपीयर हो गया। लेकिन सेकंड रिस्पॉन्स में टाइम नहीं मिला क्योंकि ये फास्टर। क्लियर है? ओके, so we are going to the types of acquired immunity. The types of acquired immunity. Under that we will start number 1. Humoral or antibody mediated immunity. Humoral or antibody mediated immunity. HMI or AMI. It is formed of B cell or B lymphocyte. And B stands for what? Bone marrow. So this is the formed and matured in bone marrow. ठीक है? तो B stands for what? ना bone marrow. So B lymphocyte formed in the bone marrow, matured in the bone marrow. हम लोग lymphocyte के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी lymphoid organ, सेकेंडरी lymphoid organ बाद में। अभी सिर्फ इतना है कि B lymphocyte
or B cells formed and matured in the bone marrow. Same to same. The second type of immunity is called as cell-mediated immunity, which is formed of T cells. And T stands for what? Na thymus. वहां पे क्या है? Na formed in the bone marrow, matured in the thymus. मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है लिम्फोसाइट का नाम? साइट ऑफ फॉर्मेशन के साइट ऑफ मैचुरेशन. साइट ऑफ मैचुरेशन. Because formation takes place both in bone marrow. But the site is bone marrow, then B cells. If it is thymus, then T cells. ठीक है? Complete है? Yes. We are starting. तो ह्यूमरल mediated immunity और antibody mediated immunity में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ना एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. First we are coming to the antigen. Just I am taking the anti means antibody. Gen means generation. That is why antigens are antibody generating molecules. So antibody generating molecules present on the cell wall or plasma membrane of the pathogen. गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है. मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि ऑल पैथोजेंस आर एंटीजेंस, मतलब एवरी पैथोजेन एक्ट एज एन एंटीजन, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस एंटीजन एंड पैथोजन? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो एंटीजन, हाँ, और जो आएगा फिर एंटीबॉडी. बहुत इजी है. क्या है? मैं supposed to be this is a pathogen, maybe taking as a bacteria supposed to be, right? इस बैक्टीरिया के सेल वॉल है, तो सेल वॉल is made up of different types of chemicals, yes or no? इस सेल वॉल पे हो, या तो वायरस अगर बात करें तो वायरस का प्रोटीन कोट है, right? This protein, this lipid, this polysaccharide which are present on the plasma membrane or cell wall of the pathogens are called as antigen. मतलब ये सब क्या है? एंटीजन. ये क्या है? Means one pathogen contains one antigen की many type of antigen. हाँ, आपके बॉडी में कोई XYZ बैक्टीरिया वायरस एंट्री किया तो उसके साथ बहुत सारा एंटीजन एंट्री कर रहा है. बिकॉज एंटीजन क्या है ना? एंटीजन केमिकली मेड अप ऑफ व्हाट? ना एंटीजेंस आर केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड. एंड ये सब कहाँ? सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो कोई फॉरेन सेल आपके बॉडी में एंट्री कर रहा है तो साइमल्टेनियसली द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस फॉरेन केमिकल्स आर आल्सो एंटरिंग, एंड these foreign chemicals will be treated as an what ना? एंटीजन. ठीक है? तो आपके बॉडी में मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स होगा कि पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि along with this particular bacteria आपके बॉडी में supposed to be 1000 बैक्टीरिया एंट्री किया. फॉर एग्जांपल 1000 बैक्टीरिया एंट्री किया थ्रू द फूड, थ्रू द एयर, फॉर एग्जांपल जो भी हो. लेकिन एक बैक्टीरिया के पास supposed to be 100 नंबर ऑफ एंटीजन. तो समझिए 1000 बैक्टीरिया एंट्री किया तो 1000 into 100 नंबर ऑफ एंटीजन एंट्री किया. हाउ मेनी वैरायटी ऑफ एंटीजन? ना 1000 वैरायटी या 100 वैरायटी जो भी हो. तो आपके बॉडी एक एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा तो एक एंटीबॉडी बनाएगा. तो 100 एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा तो 100 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा.
तो मोनोक्लोनल हुआ कि पॉलीक्लोनल हुआ? पॉलीक्लोनल, ठीक है। सो a pathogen contain many antigens. Antigen chemically formed of प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होता है, ठीक है, मे बी पॉलीसेकेराइड, मे बी लिपिड। So these antigens chemically formed of either protein or polysaccharide lipid, and these are already मैंने लिख दिया है present on the cell wall or plasma membrane of the pathogen. So a whole pathogen contains many antigens. तो आप बिल्कुल भी बैक्टीरिया को एक एंटीजन मत बोलिएगा, बैक्टीरिया को आप पैथोजन बोलिएगा, माइक्रोब बोलिएगा, एंड विच कंटेन्स मेनी एंटीजन। समझे? देखिए आपकी बॉडी में दो टाइप का एंटीजन, एंटीजन एक्चुअली टू डिफरेंट है। एक है कंप्लीट एंटीजन, दूसरा है इनकम्प्लीट एंटीजन। And this incomplete antigen is called as haften. Complete antigen and incomplete antigen में difference क्या है? Complete antigen strong, ये weak. Strong है तो able to stimulate the formation of antibody alone, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग है, खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद एंटीबॉडी को स्टिमुलेट कर सकता है, बट वीक है, हाफ्टेन है, हाफ टेन, हाफ एंटीजन, ठीक है? तो वीक है, सो unable to stimulate the production of or formation of antibody alone, but along with some high molecular substance like protein, it can induce the synthesis or formation of antibody. As it is weak antigen, ये अकेले एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर सकते। किसी हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन के साथ जब तक ये बाइंड नहीं करेगा तब तक ये एंटीजन फॉर्म नहीं करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है? तो एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, एंटीजन का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एग व्हाइट हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, शेल फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, फेदर्स, बर्ड्स, ब्लड सेल ऑफ अदर पर्सन, ड्रग्स, केमिकल्स, ये सब भी क्या है ना एंटीजन। देखिए आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, उसमें भी एंटीजन है, बट दीज एंटीजेंस आर कॉल्ड एज सेल्फ एंटीजेंस। क्या बोलते हैं उसको? अनदर एंटीजन इज कॉल्ड एज एमएचसी, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। पढ़ेंगे हम लोग बाद में, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और एचएलए, otherwise called as MHC, major histocompatibility complex. This is also a type of antigen.
बट इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं है। जैसे कि RH एंटीजन, like your A antigen, B antigen in the blood, like your H antigen present in the blood। आप लोग जानते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ सब चीज, जरूरत नहीं है, सर्कुलेशन में थोड़ा मैंने बताया था, आपको याद होगा। एनीवे, some antigens are present in your body against which the antibody will not form are called as self antigen। इसीलिए जिसका A ब्लड ग्रुप है मींस A एंटीजन है, तो A एंटीबॉडी एब्सेंट होगा बट B एंटीबॉडी प्रेजेंट। जिसका B ब्लड ग्रुप है, B एंटीजन प्रेजेंट है, B एंटीबॉडी एब्सेंट होगा बट A एंटीजन सॉरी A एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। जिसका बोथ एंटीजन प्रेजेंट है AB, नो एंटीबॉडी, एंड जिसका नो एंटीजन बोथ एंटीबॉडी। क्लियर है? क्योंकि ऑल दीज आर व्हाट ना सेल्फ एंटीजन। जिसका RH एंटीजन है उसका RH एंटीबॉडी एब्सेंट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस का कांसेप्ट आपको याद होगा। This is why the antigen will enter, then only the antibody will form। Clear है? We now comes to the next topic, antibody। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया एंटीजन के बारे में। अभी एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी formed of gamma globulin। एंटीबॉडी को हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं? इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन, यही तो। अब ये कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 डिफरेंट टाइप है, अल्फा बीटा गामा, बट व्हाई इट इज ओनली गामा? व्हाई नॉट अल्फा, व्हाई नॉट बीटा, व्हाई ओनली गामा? हम लोग ब्लड टॉपिक में पढ़े थे, याद करिएगा, घर में जाके उसको रिवाइज करिएगा कि अल्फा बीटा डज नॉट बाइंड विद एंटीजन। व्हिच प्रोटीन विल बाइंड विद द एंटीजन? गामा ग्लोबुलिन एंटीजन को बाइंड करता है। तो व्हिच एंटीजन sorry which protein will be act as a immunoglobulin protein? The protein which helps in the immunity are called as what na immunoglobulin protein, and which protein na gamma globulin protein। समझ में आ गया? एंड क्योंकि ये प्रोटीन है so it is formed of what ना 4 polypeptide chain। क्या था? 2 light polypeptide chain and 2 heavy polypeptide chain। याद होगा ना? That is by the configuration is H2L2। H2L2, 2 heavy chain, 2 light chain। Let's see एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
as already told you, this is made up of polypeptide chain. So they have N terminal and C terminal. The first amino acid is having the free what? The amino group, so it is N terminal. And the last amino acid having the free carboxylic group, it is called the C terminal. समझे कि नहीं समझे? याद है ना बाय मॉलिक्यूल? Please see everyone. Everybody see here. देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से करेंगे, 2 मिनट लगेंगे. This is the site which is called as antigen binding site or paratope. एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप, जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा, ठीक है. एंड जहां एंटीजन बाइंड करेगा वो एरिया हमेशा चेंज होगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू द एंटीजन दैट एरिया विल बी चेंज, होल पार्ट विल नॉट एबल, दैट इज नॉट नीड टू चेंज. पूरा का पूरा जो फ्रैक्चर है उसको चेंज होने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पे एंटीजन बाइंड होगा वो चेंज होगा. हम लोग पढ़े हैं एक्ट एज ए कंप्लीमेंट्री. एंटीजन का टाइप चेंज होगा तो एंटीजन बाइंडिंग साइट भी चेंज होगा. सो विच इज वेरिएबल रीजन एंड विच इज कांस्टेंट रीजन. समझ में आया? जो ऑलवेज चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे क्या? सो दिस इज वेरिएबल रीजन. वेरिएबल रीजन always called as what? The FAB. FAB का फुल फॉर्म क्या है? ना फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग. फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ना फैब. तो फैब जो है वो वेरिएबल है कि कौन?
So see, this is actually a variable region. Now, this is called as constant region. And constant region को हम लोग always क्या बोलते हैं ना FC region. FC का full form क्या है ना fragment crystallizing. Crystallized form में पहले isolate किया गया था, that is why it is called as fragment crystallizable form. FC region, constant region. समझ में आया कि नहीं? Now, this is the light chain. आप लोग कंटिन्यू करिए. And this is heavy chain. Light chain is found of less number of amino acid and उसका जो size होगा, मतलब density होगा 25,000 kD. And this is 50,000 kD. The next is number of disulfide bond. जो कि सबसे important है, क्वेश्चन से यहाँ से frequently आता है. These are the disulfide bonds present in the polypeptide chain of the immunoglobulin protein. Now, यहाँ पे देखिएगा total disulfide bond कितना है ना 16 है. देखिएगा total number of disulfide bond कितना है 16. Now you can just count it. कि 16 disulfide bond में से in light chain कितना है, in heavy chain कितना है, and in between light and heavy chain कितना है. And this is the best. बताइए 16 है पूरा गिने आप लोग. देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे भी 5 है. 5 plus 5 10 हो गया. 11 12 13 14 15 16 मिला. Now what is the number of disulfide bond present in the light chain? 5, 5, 5, 10, 10, 10. लाइट चेन में 5 5 10 तुम्हें कहाँ दिखाई दी? इसीलिए पछताते हो तुम. बेवकूफी हरकत बार बार करते हो. समझ में नहीं आता कि मुझे सही में आंसर करना है या छोड़ के भाग के आना है. नीट एग्जाम है, तो फेंक के आना नहीं है एग्जाम. तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सब क्वेश्चन बनाया जाता है. लाइट चेन में कितना है 1 2 3 and 4 और कहीं पे है लाइट चेन में 10 कहां से हो गया तुझे? गिनना भी नहीं आता है. टोटल लाइट चेन में कितना हो गया ना 4.
हेवी चेन में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हुआ? 10। इन बिटवीन लाइट चेन हेवी चेन कितना है? ओनली 2। और ये है क्वेश्चन। दिमाग हम लोग का सही जगह पे काम करना बंद कर देता है। इतना तो पता है कि भाई लाइट चेन कौन है, हेवी चेन कौन है, मैंने तो बॉन्ड भी मेंशन कर दिया है, फिर भी आपको गिनने में प्रॉब्लम है। और ये एनसीईआरटी में पूरा ये डायग्राम दिया हुआ है, पूरा डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबरिंग पूरा गिन के पूरा लिखा हुआ है। लिखा नहीं है कि कहीं पे कि 16 है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड करें, दिस इज लाइट चेन और हेवी चेन। ये क्या है, वेरिएबल है कि लाइट है, सॉरी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ई एल फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल लाइट चेन। दिस इज व्हाट द वेरिएबल हेवी चेन, VH। दिस इज कांस्टेंट लाइट चेन, CL। दिस इज योर व्हाट ना कांस्टेंट हेवी चेन 1, कांस्टेंट हेवी चेन 2, कांस्टेंट हेवी चेन 3। ठीक है। एंड बीच में हिंज है, दिख रहा है आपको? हेवी चेन के बीच में हिंज है जो यहाँ पे बेंड हुआ है। तो आई होप आप लोगों को एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, नहीं? पैराटॉप याद रहेगा ना? पैराटॉप क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट की एंटीजन डिटरमिनेट साइट? बाइंडिंग साइट। हाँ, आप देखते हैं। एग्जाम हॉल में पहले तो पूरा खुद को शांत रखो। जो जितना शांत रहेगा उसका दिमाग उतना अच्छा काम करेगा, रहेगी नहीं? देखो मैं कैसे हमेशा शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ कि नहीं? कभी देखे हो मुझे अशांत रहते? तो मैं हमेशा शांत रहता हूँ, ताकि दिमाग सही जगह पे सही टाइम में परफेक्टली काम करे। दिमाग के अंदर अगर हलचल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली तो एरर मेटाबॉलिज्म विल देयर, एंड एरर मेटाबॉलिज्म होगा तो एरर प्रोडक्ट निकलेगा, रहेगी नहीं? इसीलिए दिमाग को पहले तो शांत रखो, हर जगह काम देगा। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कोई तुमको डांट रहा है, भाई डांट तो रहा है ना, डांटने दो, शांत रखो दिमाग। उल्टा कुछ बोलो मत, वो बोल बोल के थक जाएगा, चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई तुमको डांट रहा है, बहुत जोर जोर से आपको कुछ परेशान कर रहा है, ठीक है भाई उसको परेशान करने दो, हम वो एरिया छोड़ के चले जाएंगे, है ना? अब अगर आप दलदल में फंसोगे तो आपके पैर हाथ में तो मिट्टी लगेगा ही, घुसना ही नहीं है ना। एवरी सिचुएशन के लिए सोल्यूशन होता है, एंड वो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? कीप डिस्टेंस। सिंपल है। तुमको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, आप उसको बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं, खुद सेपरेट हो जाओ, चले जाओ अच्छे जगह पे, क्या दिक्कत है? हो गया सॉल्व, है कि नहीं? दिमाग को शांत रखो, सब बढ़िया होगा। अब ये फॉर्मूला ना लाइफ टाइम आपको समझ में आएगा कि भाई सर ने बोला था, हाँ सही में काम दे रहा है। समझे कि नहीं? कोई मारा, ठीक है मार दिया तो मार दिया, क्या दिक्कत हो गया? वो स्वर्ग में चला जाएगा, आप नर्क में चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब एक ही जगह जाएंगे। पता, देखो मुझे कोई करता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है करने दो, आराम से करने दो। इसीलिए शांत रखो दिमाग को, नीट मिलेगा वो भी अच्छे जगह पे, एम्स में।
फोन जरूर करो। चलिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एंटीजन दिखाई दे रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी बोथ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? लुक, दिस इज एंटीजन, दिस इज लाइट चेन, दिस इज हेवी चेन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि the antigen binding site is formed of only light chain, only heavy chain की light chain heavy chain both? हाँ, इसे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी गलत करके बच्चे आते हैं कि भाई एंटीजन को कौन बाइंड कर रहा है, लाइट चेन बाइंड कर रहा है कि हेवी चेन बाइंड कर रहा है कि बोथ बाइंड कर रहा है? बोथ, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट ना, लाइट एंड heavy chain. Which part? Variable part ki constant part? Variable region of both light chain and heavy chain will form the antigen binding site. C, बहुत ही easy है. This one is antigen determinant site, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिटॉप। तो एपिटॉप और एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट किसका? ऑफ एंटीजन की ऑफ एंटीबॉडी। हाँ, कंफ्यूज करेगा पैरेटॉप के साथ, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट which is otherwise called as paratope of what? Antibody. एपिटोप के हिसाब से पैराटोप चेंज होगा कि पैराटोप के हिसाब से एपिटोप चेंज होगा? You can see that the epitope and paratope both are identical कि complementary? Complement है कि नहीं? आइडेंटिकल नहीं है ये, आइडेंटिकल होता तो बाइंड कैसे करता? लॉक एंड की है। तो जैसे ही एंटीजन आएगा उसका एपिटोप के रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी का पैराटोप चेंज होगा। सो विद रिस्पेक्ट टू द एपिटोप द पैराटोप विल चेंज and that is why paratope is the antigen binding site or that is variable region of the both light chain and heavy chain, right? Clear है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी पढ़ेंगे एंड द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन मैकेनिज्म हम लोग डिस्कशन करेंगे।